Okay, so I have started the recording and let me share the file. Okay, so we have completed two models, actually three models. One was liquid drop, then its correction, then there was Fermi gas model. In liquid drop, we have five terms which give rise to the binding energy, and we can easily predict the binding energy, which is close to the experimental value. Then we have Fermi gas model, and in Fermi gas model, we can have the binding energy equation, which contains only two kind of interaction, which is one is volume interaction, volume term kind of thing, and one which is your asymmetric term. We don't have any term which give rise to coulombs or surface or pairing term in the Fermi gas model. The last that we have to study is the shell model. Shell model is somewhat different. It does not give the idea. We don't use shell model to directly to calculate the binding energy. But what we do, we can predict many other properties. For example, its angular momentum, its magnetic moment, quadrupole moment. So several, even the excited state, how the excited state is going to behave in a nucleus, that we can discuss using shell model. So that is something it give you further more properties, which liquid drop model and Fermi model is lacking. In liquid drop or Fermi model, we don't have any idea of any other property except your binding energy. You cannot predict the angular momentum or total angular momentum. You can predict the magnetic moment. You cannot predict the quadrupole moment. These are the basic disadvantage in the liquid drop model or the Fermi gas model. But here we can do that easily in a very well ordered way. Okay. So first we have to understand, is there any evidence for this model? Means if we are telling or if we are saying that there is a shell structure, means just like an electron, we have a shell structure for the nucleus also, because electron are fermions and they are obeying certain rules, and they are placed in the orbit, and all those orbit are not uniformly placed. They don't have a uniform energy difference, but there is a non-uniformity. You have certain shell, within that you have a subshell. For example, you have 1p 1s, 1p तो उसमें न्यूक्लियर में होता है, इलेक्ट्रॉन में नहीं होता. Electron we have 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f. So what is happening as you move on the energy level, means 1 2 3 4 in an energy quantum number, you have a different shell which is introduced, and within that shell you have a sub shell also. And whenever there is a shell closure, means when the shell is completely filled, then that particular atom is very stable. We have example, all the inert gas. In the inert gas, we have a shell closure, means if you have 1s, 1s will accommodate 2 electrons. If 2 electron is there in the atom, then it is very highly stable atom. It is not going to react. Chemical reaction के सेंस में कहते हैं, जब भी atom की हम बात करेंगे, whenever we talk about atom, it is concerned with a chemical reaction. And when you go for second energy level, you have a 2 subshell, that is 2s and 2p. 2s will accommodate 2 electrons, p will accommodate
6 electrons. So once you provide 8 electrons, that atom become very stable. So helium के बाद next क्या है? Neon. Neon is again a stable one. It is not easily going to react with any chemical. It is not going to take part in the chemical reaction very easily. You need to provide energy to have a chemical reaction. Then argon and then so on. So that kind of picture is there in the electron. So do we have such kind of thing in the nucleus, or are there any evidence? Are there any evidence for uh, nucleus also? Means when you study the characteristic of nucleus for different cases, do we have such kind of shell closure kind of thing? So we have certain evidence. We will discuss 1, 2, 3, 4, and 5 evidence. There are several other also, but we will discuss 5 evidence that give rise that there is a shell kind of a structure which is existing in the nucleus also. Means proton and neutron also follow a shell structure. So there should be a closure of shell. Then there is another shell that will start after some energy difference, big energy difference. Then it will close. Then again it will start with another big energy difference and so on. And whenever your number of neutron or proton is close to your shell closure, that nucleus has to be very much stable, extraordinary stable. तो नेचर में हमें वो न्यूक्लियाई ढूंढने हैं या उनकी प्रॉपर्टी ढूंढनी है जो कि बहुत ही स्टेबल है. So the first evidence that we will discuss in numerical sense in the tutorial class, that is separation energy, nucleon separation energy. अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, उसको हम ट्यूटोरियल क्लास में उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे. बट अभी सिर्फ जस्ट गेट द आइडिया व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी. सेपरेशन एनर्जी इज समथिंग लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे आप आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या करते हैं? You remove electron, how much energy is required to remove electron? That is called ionization energy. And you can have first ionization, you can have second ionization, and third ionization, so on. So as you go on increasing the ionization number, the more energy you have to provide. In the same sense, what we can do, we can remove a nucleon from a nucleus. And separately we will talk that if I want to remove proton, then how much energy is required? If I want to remove a neutron, then how much energy is required? Okay, so people have done this. They have done this, and this is not called as a ionization energy. This is called as a separation energy. Means you are separating a nucleon from the nucleus. So there are two kind of separation energy. First is a single nucleon separation energy, and second one is two nucleon or two neutron or two proton. Means you are removing two things. Why these two numbers are important? Because we have already seen that the nuclei which is stable, that exists with either odd A or even A and Z. Sorry, N and Z. या तो odd A होगा, यानी एक न्यूक्लियन ही अनपेयर्ड होगा, या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा. तो उसको रिमूव करना, how much energy we have to provide to remove a single which is unpaired, because odd number, if you have both are paired, means in the nucleus, and if you want to remove them, means you want to remove a pair of neutron or pair of proton, something like this. So that is sometimes it is called 2n or 2p separation energy. When you're removing two neutron at a time or two proton at a time, that is called pair of nucleon separation. So pair of nucleon you are separating. नॉर्मली अल्फा डीके में भी यही होता है. अल्फा डीके में आपके पास प्रोटॉन का पेयर और एक न्यूट्रॉन का पेयर, दैट दे आर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस. बट दैट इज मोस्टली देयर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सो दैट इज फेवरिंग, वो फेवर करता है उसको टू मेक योर न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियाई टू बी स्टेबल. So that favors the thing. But lighter nuclei में we don't have alpha decay, but we can perform that. We can bombard the nuclei with certain nucleon, and we can do the reactions, and when we study the reaction we can have this kind of energy. तो हम वो न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग, आफ्टर गेटिंग द फॉर्मूला, we can deduce certain order. Yes, this is the order which is being followed when you discuss the nucleon separation energy.
So normally what happens, let me just read out the statement. 2n or 2p separation energy, like in atomic ionization energy, increases gradually with n and z. So as you go on increasing the value of n and z, these two number is going to increase. What is this number? This is a separation energy. You are separating how much energy is required. This is what we are talking about. As you go on increasing the n and z, this is going to increase. Obviously, nucleus will not try to remove the न्यूक्लियन इजली. वो जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑलवेज एनी न्यूक्लियाई वांट टू हैव मोर. बट व्हाट हैपेंस when you study this chart? Let me just show you the chart also. Instead of writing on the word file, I just share the pdf क्योंकि वो ज्यादा बेटर होगा, उससे आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा. जो बुक है ना क्रेन का ही पीडीएफ में शेयर करूँ. Just wait for a minute. Okay, is it visible to you? Is it visible to Yes, you? sir. Okay. Yes, sir. Because इसको ड्रॉ करना एग्जाम में भी मुश्किल होता है, तो we just write the statement. The statement I will give you in the notes. These two are actually, this one is 2p. 2p means 2 proton, and s is separation energy. This is 2n, not exactly visible. This is 2n neutron separation energy. So when you look at the graph, when you plot that graph, obviously for any, you see certain bumps are there and there's certain minima is there. So there are number which appear, these number appears from this graph. That peak, at the peak value, we are noting down how much neutron or proton was existing in the nucleus when you are doing this separation. तो separation से पहले, यानी without removing the nucleon, you just count the number. How many numbers are, then you do the separation. So whenever these nucleus, whenever their number is something like this one, means if either n or z, means either neutron or proton is equal to any of these numbers. 2 भी है, 2 को हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, 2 के लिए बहुत ज्यादा इजी आंसर आता नहीं है. लाइटर न्यूक्लियर में बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम भी होते हैं, बट हायर न्यूक्लियर में दे आर मोर कंसिस्टेंट. तो 8, 20, 28, 50, 82, 126, they have peaks. Means you require more energy to remove 2 proton or 2 neutron from those nuclei whose nuclear number is such a way that either number of proton is equal to this number or number of neutron is equal to this number. यानी कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, अगर उसमें मान लेते 82 न्यूट्रॉन है, and if you want to remove a neutron, pair of neutron, so it is very difficult.
you require more energy with their neighbor. Neighbor में देखो यहाँ पे neighbor में इस तरफ जाते हो तो it is you have a dots. These are different nuclei, and when you just cross this one, it is very easy. Means 82 से अगर 83 हो जाए तो nucleus want to give its neutron. ले जाओ भाई, ले जाओ, हमें नहीं चाहिए 83 85 वाला, हमें 84 वाला चाहिए ही नहीं, 82 वाले हमें चाहिए थे, उससे ऊपर जो हो गए इनको बाहर करो. तो something like that, it drastically decreases, then again it increases, it reaches to 120, then again it decreases. तो जब ये when this, even this picture is similar for the proton also. If we call it कि इसके न्यूट्रॉन में फॉलो होते हैं, नहीं, प्रोटॉन में भी फॉलो होते हैं. प्रोटॉन also have the similar picture, 8 20 28 50 82, means this number has to do something. और ये number, if you look at the binding energy formula, or if you look at the liquid drop model with quantum corrections, or even Fermi model, you don't find these numbers are unique. It means somewhere we are lacking. इस नंबर पे ऐसा क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस बहुत ही स्टेबल हो रहे हैं? Why these numbers are so important for a nucleus? So in nuclear physics, this number is called as, anybody know? All these numbers is called as Magic number. very good. They are called magic numbers. And the missing number is 2, which is actually the very lightest nuclei, and it is very difficult to understand, but still 2 is there. So 2, 8, 20, 28, 50, and 82, and 126. These are magic number. For proton, we don't have 126, but neutron में 126 exist करता है. Okay, this is one evidence. The first evidence that shell is existing. Yani these numbers are actually shell closure value. It means that when the shell is closed at, when you have 8 proton or neutron, either proton or neutron, this is not saying that A should be equal to this one. It says that either P or either neutron. P means proton or neutron. दोनों में से कोई एक, either of them. That then that new particular nuclei is very stable. If Z is equal to this number, or if N is equal to this number, then the nucleus is stable. And if you find a nucleus whose Z is also equal to some of these numbers, or N is also equal to some of these numbers, then that nucleus is extra stable. It is very difficult to break. अगर for example मेरा कोई न्यूक्लियर है जिसमें P की वैल्यू, प्रोटॉन की वैल्यू 50 है और न्यूट्रॉन की वैल्यू 126 है, तो that would be the very stable nuclei. और किसी न्यूक्लियस में मेरे पास 50 प्रोटॉन का नंबर है और 120 मेरा न्यूट्रॉन का नंबर है, तो that nucleus is also stable due to proton. And if I have a nuclei which have 55 as a proton number and 135 as a neutron number, that nuclei will be a unstable system. So with these numbers, whenever numbers is given, you can easily say these nuclei will be stable, and you will also find that their decay is not given. They don't decay, they are stable elements. But this is the first evidence. And why the evidence is so close to shell model? Because if you see for the electron case, this is the electron case. This is the atomic radius, and we can talk about the ionization. Here is the ionization. You look at the ionization peak. Helium से electron निकालना very difficult. Neon, argon, all these number exist on the peak. Krypton, xenon, and radon. तो सारे कहाँ हैं? पीक पे ही है. तो जब ये पीक पे हैं तो सेम पिक्चर हमारा न्यूक्लियस के लिए भी होना चाहिए. अभी तक हमें नहीं पता कि वो पिक्चर है कैसा. वी डोंट नो एनी डेरिवेशन, वी डोंट नो एनी थ्योरी अबाउट दैट, बट evidence is there. Then the second one I will discuss from this only, not this one. I think yes, this one, this graph. नोट्स में बना सकते हो, एग्जाम में भी आएगा. तो आपको नॉर्मली एग्जाम में आता है या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा या 8 मार्क्स का आएगा. डिस्कस द एविडेंस फॉर अ शेल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस. तो एविडेंस, सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डिस्कस करना है, बताना है, इतना डिटेल में नहीं बताना है, बट डिस्कस करना है. एटलीस्ट एक लाइन, एक ग्राफ होना चाहिए आपके पास. ओके, द सेकंड पिक्चर इज, or second evidence is, just wait. Okay,
So the second evidence is concerned with the this number. I don't think it is visible to you in a more prominent way, but this is something like a sigma, which is reaction cross section. आपको सिग्मा नहीं दिख रहा होगा ये वाला, बट एम बी दिख रहा होगा. ये तो दिख रहा है आपको, एम बी. एम इज मिली एंड बी इज बॉम्बे, है ना? नहीं, एम इज मिली एंड बी इज बॉम्बे. B is what? If I talk about sigma, then what should be B? B is a unit value. It has a unit and it is known for it. अगर मैं क्रॉस सेक्शन जब भी बोलता हूँ तो B का मतलब क्या है? Small b. हाँ, small b, small b. Small b. It is always related to the cross section. जब भी क्रॉस सेक्शन हम कहते हैं ना, तब स्मॉल b कहते हैं. If I am able to write here, yes. Not able to write. Okay. Whatever. It is barn. Barn is unit of area. बार्न इज यूनिट ऑफ एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया का यूनिट बार्न कहते हैं, विच इज बार्न की वैल्यू है 10 to the power of -24 सेंटीमीटर स्क्वायर. कैन यू इमेजिन दैट एरिया? यू कैन नॉट इमेजिन. सेंटीमीटर का डिवीजन करना है 10 to the power of 24 टाइम्स. दैट इज द वेरी स्मॉल यूनिट, वेरी स्मॉल. इट इज वेरी स्मॉल. बट न्यूक्लियस के लिए दिस इज अ बिग नंबर, बिकॉज न्यूक्लियस का डायमेंशन ही हमारा 10 to the -15 माइनस होता है, उसको स्क्वायर कर दो. It is feasible for a nucleus, but for our case it is useless unit. But yes, for nucleus it is very big unit. Okay, so let us don't discuss this in detail. We have to discuss either in 5th or 6th chapter. So this one is something like a means it is giving you idea. This graph is giving you idea that if you bombard a neutron on any nuclei, you just take, इसमें सारे न्यूक्लियाई लिए आप देखोगे नंबर आपके एल्युमिनियम या Na सोडियम से स्टार्ट होकर के मर्क्यूरी तक गया है. देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ न्यूक्लिया. आपने पूरा रेंज लिया, लाइटर से हेवी न्यूक्लिया लिया हुआ. एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर बम्बार्डिंग द न्यूट्रॉन. एंड व्हाट यू आर चेकिंग, what is the reaction, means a reaction is there. What you have to check, that neutron is being captured by the nuclei. आपने कोई भी न्यूक्लिया लिया, आप न्यूट्रॉन बम्बार्ड कर रहे हो, और अदर साइड पे आप डिटेक्टर लेके बैठे हो और यू आर चेकिंग कि मेरे पास मैंने अगर 100 न्यूट्रॉन बम्बार्ड किए थे तो हाउ मच आई एम गेटिंग. If I am getting 95 means 5 neutron has been captured by the nucleus. Clear? रिएक्शन का मीनिंग समझ में आ गया. न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन है ये, जिसमें न्यूट्रॉन कैप्चर कैपेबिलिटी वी आर लुकिंग फॉर द न्यूक्लियर. रिएक्शन इज क्लियर. If reaction is clear, then only we can discuss this graph. Otherwise, ये graph बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि graph है क्या. Is it clear? Yes sir. Neutron capture means how much neutron, और ये परसेंटेज में लिखा हुआ है. ये वैल्यू 1, 10 और 100 जो आप देख रहे हो, that is in percentage with certain unit. Unit is very small. So if you are bombarding a neutron to the nucleus, how many neutrons get captured within the nucleus and how much you are receiving at the detector. This is what you are recording. So as you go on recording, when you look at this curve, it is not very fitted curve, obviously. ये बहुत आप कह सकते हो कि भैया ये तो फिट है ही नहीं, ये तो देखो ये कुछ न्यूक्लिया यहाँ पे लाई कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं. But this is one of the average curve we can draw. This is one of the, we can say least square fitting हमने कर दी और एक average line हमने draw कर लिया. But इस average line से एक meaning बहुत important निकल रहा है. What meaning is that? You look at these numbers. जो ये dash line बने हुए ना, this number is 28. This number is 50. This number is 82. And this number is 126. What you find, if you're not on these numbers, then there is a good amount of neutron capture by the nucleus. This number is good. And whenever there your nuclei which is having either neutron equal to
28 or 50, the neutron capture decreases. It don't want to get any extra neutron embedded in the nucleus. आपने 100 पास किए, आपको उस तरफ 99 मिल गए, यानी एक न्यूक्लियन की कैप्चर होने के चांसेस है. दैट इज अ पॉसिबिलिटी, वी कैन नॉट नेगेट कि ये जीरो ही होना चाहिए. मींस एट दीज नंबर्स 80 पे भी देख लो, 82, देयर इज वेरी स्मॉल न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन. इसके काउंटर पार्ट में जो नेबरिंग है, दे आर एट 100 और दिस इज एट 1. So there is a 10 to the power of 2 times difference in the capture of the neutron. You go for a 126, again Pb and bismuth, again that is around 1 or 2 or you can say 5, and this is again 100. So there is a 2 order of difference between the neutron capture for those nuclei which is lying at the magic number. तो जिस भी न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन की वैल्यू मैजिक नंबर के इक्वल है होती है या इट इज इक्वल टू दैट वन, then its capability of capturing a neutron is very less with respect to its neighboring nuclei. Clear? Is it clear? Yes, sir. Means it, is it actually clear कि clear हो गया तुम आगे बढ़े, या मतलब should be clear कि हम क्या ग्राफ पढ़ रहे हैं, उस ग्राफ से हमें क्या आइडिया लगा है. बढ़े आगे नेक्स्ट एविडेंस पे. Yes, sir. Okay, so let us go to the next evidence, that is this one, alpha decay. This is also what we can discuss, that what we are doing, E alpha. You can see here it is E alpha. It is a energy of the alpha particle which is coming out of the nucleus. So what happens? You take any isotope, आपने उसमें क्या करना है, न्यूट्रॉन का नंबर वेरी करना है. Z सेम ही रखो because this is concerned with a particular atom. I think radon है या क्या है? Let me just see in the caption. A, Rn, isotope of Rn. So what we are discussing, कि when the alpha particle is coming out from Rn, and if I vary the value of n for that particular atom or for particular nucleus, Z is same, but what we are varying, we are varying the neutron number. So that we are discussing about the same atom where Z is same. We are not कि अब Z भी चेंज कर दो, n भी चेंज कर दो, फिर प्रॉपर्टी स्टडी हो तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा. So what we are able to look at कि as if n is going from 115 roughly 114 से लेकर के 136 तक, the good amount of isotope, इसके बहुत अच्छे खासे isotope. So alpha particle की एनर्जी आप मेजर कर रहे हो, और when you are at the very low value of neutron, its energy goes on decreasing. Means alpha particle which is coming out, the alpha particle which is coming out, it has lesser and lesser energy. ठीक है? But what happens? This should go on decreasing. भाई अगर मेरा मैजिक नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, कोई शेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ग्राफ मेरा इस तरह का ट्रेंड होता. इट शुड बी गो ऑन फॉलिंग, है ना? वो फॉल करता जाता, फॉल करता जाता. देयर इज नो रूल. अगर शेल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, देयर शुड बी नो रूल. इट इज सिंपल रूल कि आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ता है रहा है, तो न्यूक्लियस आपका स्टेबल तो नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अल्फा पार्टिकल. दिस इज व्हाट वी कुड इंटरप्रेट. But what happens when it reaches to 126? 125 पे तो एक लोएस्ट वैल्यू आई है. When it is difficult to remove alpha particle, or alpha particle will carry lesser energy. But when it goes to 126, then what happens? The alpha particle energy increases. Means 126 पे थोड़ा increase हुआ है, वो नंबर तो बहुत ज्यादा नहीं है, but 127 जब increase हुआ, this is what. तो डॉटर न्यूक्लिया के पास जब हमारे पास ये हमारा डॉटर न्यूक्लिया का प्लॉट है, मतलब डॉटर न्यूक्लिया और अल्फा एनर्जी का हमारा प्लॉट है. ये जो नीचे नंबर आपको दिख रहे हैं डॉटर न्यूक्लिया के दिख रहे हैं, और ये अल्फा एनर्जी जो आपके पेरेंट न्यूक्लिया से रिमूव हुए हैं. तो दीज आर डॉटर न्यूक्लिया नंबर. तो व्हेन द डॉटर न्यूक्लिया गेट 126 न्यूट्रॉन, यानी उससे पहले न्यूट्रॉन के नंबर मैजिक नंबर से मैच नहीं कर रहे थे,
but neutron number जब increase हो रहे थे तो alpha particle जो which is coming out, that is lesser and lesser and lesser energy, it goes on decreasing. But when the nucleus reaches to 126, it will try to throw the new alpha particle. वो क्या करेगा, जो भी एक्सेस है उसके पास, इट विल ट्राई टू रिमूव. जाओ यार, जितनी एनर्जी लेके जानी है, जितना पैसा लगे ना, भागो, हमारा सिस्टम हमारा स्टेबल हो जाएगा. यू जस्ट गो ऑन and it will give extra energy to that. So what happens when the daughter goes to 126, 127, 128, 129 and so on, its energy increases. At this point, ये तीन चार नंबर जो आपको दिख रहे हैं ना, 126, 127, 128, that goes on increasing. So nucleus will try to remove the alpha particle, and when it is removing with good amount of energy. ले जाओ एक्स्ट्रा. कई बार होता है ना, घर में कोई डिस्कशन चल रहा हो पेरेंट्स के बीच में और बच्चा डिस्टर्ब कर रहा हो, तो व्हाट यू डू, भाई जा यार, ये 10 रुपए ले, आइसक्रीम खा के आ जाना. तो जो बच्चा बाहर गया, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई आइसक्रीम खाने के लिए, एक्स्ट्रा पैसे में. और जब कुछ भी डिस्कशन घर में नहीं चल रहा था, मतलब थिंग्स आर नॉर्मल, देन व्हाट हैपेंस, वो पूछेगा आइसक्रीम चाहिए, नहीं, ऐसे ही घूम के आ जा बाहर, फिर वो बेचारा ऐसे ही 5 मिनट घूम के आ जाएगा. तो यू कैन कंपेयर व्हेन द न्यूक्लियस डॉटर न्यूक्लियस बिकम स्टेबल, उसको 126 मिल गया, और उससे ज्यादा भी अगर है तो उसको निकालना चाहेगा, इट विल ट्राई टू रिमूव. तो इस टाइम पे, यानी जब आपके मैजिक नंबर के क्लोज में है, देन देयर विल बी चेंज इन द अल्फा एनर्जी. और बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज अराउंड 8 एंड दिस वन इज अराउंड 120, सॉरी 7. 7 और 8 का 8 है, ये 6 होगा, ये 4 है. हाँ, मतलब डबल टाइम से थोड़ा सा कम है डिफरेंस, यानी 5 है और 8 है. तो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. That is not a big difference, but it is still, that is a difference is there, and this difference is very important for the shell structure evidence. Yes, 126 पे कुछ uniqueness है, and we need to answer that uniqueness, why that 126 is existing. Okay, then next is the fourth one. Is it clear? This also clear? This is clear? If it is not, then you can ask कि भाई थोड़ा सा और explain कर दो. अगर clear है तो we can move forward. Hello, sir. हाँ बोलो. I have a doubt. Like after 128, we saw in the other graph the stability, like Which graph? falls. Hello. For neutron capture? Which graph you are saying? Means this one. I think ionization. For neutron capture and the previous Okay. graph, Okay. there was a steep after just after 128. 120, 126. This is 126. Okay, 126. After 126, Yes. there was steep. There is no Like, steep. No. You cannot fit with means you cannot match. You cannot make a line which is attaching all the points. and also what I was saying actually is just if we go for 127, there is a sudden increase in neutron capture. Yes. It means what the The- nucleus will try to do, it will try to go to the next magic number, which is 182, which is hardly possible. The next number is 120, 182, I think. If you calculate using shell model, that number is 182. So what will happen? Nucleus will try to make, means 126 I have got, that is a stable. If I get 127, then I have to move to the other magic number. I will try to close the shell. एटम में भी तो ये होता है ना. एटम में क्या करते हैं, when you have first group element, all the potassium, sodium, lithium, they easily remove its electron to make itself a closed shell. And when you talk about oxygen, fluorine, or means not the last group, but before that, second last or third last group, they will try to get the extra electron so that the shell is closed. Yes, sir. I understood that. By my question is, in the graph we just seen now, like alpha particle energy graph, it is showing a gradual decrease after that magic. Yes. But why that happens? Okay, why the gradual decrease is there? Yes, sir. That is
that is due to the radius of the nuclei, because radius is dependent upon the A number. And as your, because alpha particle is not decided only by the magic number, the alpha particle decay is not decided only by the magic number. The trend of decreasing, this decreasing, what you are looking at कि सर ये decrease क्यों हो रहा है, इसका reason उसके radius से है, nucleus के radius से. As the radius increases, the barrier size increases. When the barrier size increases, it is a lesser chance that alpha particle can come out. Clear? Please mute yourself. कौन है ये स्टूडेंट जिसने क्वेश्चन पूछा? वो नहीं है. Okay, the person who has asked the question, please again you just speak. Yes, sir, I got it. चलो वाशु, आपने पूछा था. तो इसमें आपके पास जो कर्व है ना, इस कर्व में दो डिफरेंट एनालिसिस हैं जो एम्बेडेड है, बट दूसरे एनालिसिस को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे. व्हेन वी विल डिस्कस अल्फा पार्टिकल, दैट टाइम वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द टनलिंग कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा पार्टिकल, एंड दैट इज इन अ डिटेल थ्योरी दैट वी विल डिस्कस, दैट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा, इट इज डिफिकल्ट टू कम आउट. Yes, sir. ठीक है, तो एनर्जी भी वो कम लेके आएगा. और जितना साइज एक मींस देयर इज अ थ्योरी फॉर दैट. ये तो हम उसको मैच कर रहे हैं, दैट थ्योरी, इन दैट थ्योरी दिस इज अ पिक्चर कि यहाँ पे कहीं मैजिक नंबर के आसपास हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो वी कैन रिलेट दैट. So we will discuss in detail why this gradual decrease is there. And if you talk about neutron, yes, what will happen when it is 127? It will try to get more neutron. It is easy. It is easy to embed a neutron. उसको कहीं से कोई रिपल्शन फील नहीं होगा, कहीं से कोई डिफरेंट resistive force feel नहीं होगा. It will go inside. Means if you have 127 neutron, why can't we have 128? Let us we have 128. Let us we have 129. We have 130. So on. That is something like that. Till there's certain stability factor. Clear? Is it clear? So now we come to the fourth evidence, that is binding energy per nucleon difference between the measured value and the calculated value. क्या हम डिस्कस करेंगे? Binding energy per nucleon, this is what the thing which we have to calculate. This is what we have to discuss between what? Between the calculated and measured, means experimental and theoretical value. आपने जो एक फॉर्मूला बनाया था बाइंडिंग एनर्जी का, वो आपके पास है, और एक है एक्सपेरिमेंट, मींस एक्चुअली द मास ऑफ न्यूक्लियाई एग्जिस्ट, and according to that mass you can predict the binding energy, or there is a mass defect, you can use that mass defect formula to calculate the bind. That would be the experimental value. And the other value is your formula which you have derived. आपने देखा होगा जब मैंने लास्ट टाइम आपको ग्राफ शो किया था, उसमें हमारे पास दोनों कर्व थे, एंड द कर्व इज फिटिंग वेरी वेल. You remember the binding energy having all the 5 terms, and the binding energy due to mass defect, they are very much fitted, means they are fitted well, means if you compare with the liquid drop model only. So what we have said, yes, ये तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला बन गया, सेमी एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, which is not exact, but वो fit कर रहा है हमारे कर्व. But we have missed one thing in there. We have not measured the difference and how the difference is varying. And if you look at detailed difference of these binding energy, then you will find certain picture. That picture is very small, but we can find that picture. So let me share again the Excel file. वो इस बुक में नहीं है, बट वो एक्सेल जो मैंने बनाया था उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट 3 एविडेंस इज क्लियर टू यू? First 3 evidence is clear to you? Yes, sir. ठीक है, ओके. तो हम जरा एक बार अब फोर्थ एविडेंस पे जाते हैं. फोर्थ एविडेंस हमारा क्या है?
बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन मींस मेजर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, या calculated and experimental value. So let me just share the file to you, and then we can see that in all the evidence what we are actually discussing is the existence of magic number. अगर मैजिक नंबर एग्जिस्ट करते हैं तो यस हमारे पास एविडेंस है. एक ही एविडेंस होता तो वी कुड नॉट गो फॉर द थ्योरी कि इसके लिए हम थ्योरी बनाए. कहीं एक जगह ठीक है, किसी एक एक्सपेरिमेंट में मेरे को मिल गया, आई गॉट सर्टेन नंबर, then it's okay. But if it is being repeating in other experimental evidence, then we have to rearrange our theory. Okay, so let me just, this is the file आपको अभी शेयर नहीं है, फोल्डर शेयर हुआ है. Let me just share the file. Okay, so this one, this is the difference which I have plotted here. लास्ट टाइम ये नहीं देखा था हमने सिर्फ देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यूजिंग मास डिफेक्ट, दिस वन, एंड बाइंडिंग एनर्जी यूजिंग क्वांटम मैकेनिकल करेक्शन, दिस वन. तो ये दोनों कर्व को हमने प्लॉट किया था. लेट मी जस्ट हाइड अदर थिंग्स. ये टर्म की में जरूरत है नहीं तो उसको हम हाइड कर देते हैं. ओनली फोकस ऑन सर्टेन नंबर्स. वी डोंट वांट दीस नंबर्स आल्सो. ओके, सो वी आर लेफ्ट विद दिस वन. जो मैजिक नंबर है ना, लो न्यूक्लियर पे बहुत अच्छे से उसका एविडेंस मिलता नहीं है. यू नीड टू गो इन अ डिटेल वे. तो लो पे बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पता नहीं चला होगा. मतलब 2 मैंने मार्क कर रखा है. If Z or N is 2, and obviously, how many elements I have took means how many nuclei I have took, only 100. So this is very low. I have missed 900 nuclei. तो उनको भी मुझे यहाँ डालना था, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं कि 1000 न्यूक्लियाई के ZA और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला सब कुछ लिख करके यहाँ पे ड्रॉ करूँ. बट इट इज फॉर यू, इट वुड बी वेरी इजी if you want to do that. You can write N and Z and A. ये 3 नंबर आपको लिखना है, बाकी तो सब फॉर्मूला है. एक बार आप लिखोगे, उसको ड्रैग करोगे तो फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड. तो आप एक के लिए कैलकुलेट करो, बाकी के लिए हो जाएगा. बट ये तीनों नंबर आपको लिखने में मेहनत लगेगी, बिकॉज यू नीड टू कैलकुलेट, I mean you need to write all the these numbers for all the nuclei which is existing, either isotope, either decaying, whatever. मैंने तो सिर्फ 100 ही लिया है. तो what we can see at second we don't find any. ये नंबर थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो इसको भूल जाते हैं जो 1 1 वाला है. ठीक है, जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन बिहेव्स इन अ वेरी डिफरेंट वे, तो उसको हम भूल जाते हैं. इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, डिफरेंस ही बहुत ज्यादा आ रहा है. एक माइनस में आ रहा है, दूसरा हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन हमारा मींस मेजर्ड वैल्यू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और कैलकुलेटेड वैल्यू -7 है. दैट इज क्वाइट नॉट करेक्ट. मींस न्यूट्रॉन के लिए आप लिक्विड ड्रॉप मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल करेक्टेड लिक्विड ड्रॉप मॉडल यू कैन नॉट यूज. दैट इज वेरी वेग थिंग. बट हायर न्यूक्लियर के लिए, हायर मास के लिए यू कैन यूज. नाउ लुक एट द 8 के लिए भी थोड़ा सा एविडेंस हमारा ऑफ में चला जाता है. द डिफरेंस इज लेसर देन इट्स नेबर. ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है. बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पे कम है मेजर्ड डोज में. देन वी गो फॉर द नेक्स्ट मैजिक नंबर, दैट इज 20. 20 में भी थोड़ा सा बहुत अच्छा एक्यूरेटली वैल्यू नहीं आ रहा है. उसके आगे तो डिक्रीज हो रहा है. मीन्स यहाँ पे एक 0.11 की वैल्यू दिख रही है, ये भी वैल्यू ज्यादा है, 0.2 है. दैट इज मोर देन दिस नंबर. उसके नीचे डिक्रीज हो गया, वो भी मैजिक नंबर ही बट डिक्रीज हो गया है. तो यहाँ पे भी अनयूजुअलिटी हमें मेजर नहीं हो रही है. means we need to go further higher. So let us go to the next magic number which is 28. न्यूट्रॉन का ये नंबर है, मतलब न्यूट्रॉन is 28 and here proton is 28. ठीक है, and we don't have any nuclei which have both 28. means Z is also 28 and N is 28. मैंने वहाँ यहाँ पे नहीं लिखा है because मैंने सिर्फ स्टेबल एटम लिए है. I have not took any other isotope. तो मैंने बहुत कम यूज किए हैं, तो maybe I have missed. So look at this one. 0.08, again this number is higher, this difference is lesser and lesser and lesser, but here we have a higher number. यहाँ पे भी बहुत अच्छा जस्टिफाई नहीं हो रहा है. थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये सर क्या दिखा रहे हैं नंबर, कि ये क्या नंबर, तो हम भी लिख लेंगे. हाँ, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा अभी आपको, हो सकता है. लेकिन जब ग्राफ देखोगे तब वो क्लियर हो जाएगा पिक्चर की क्या डिफरेंस है. अभी सिर्फ हम नंबर एक बार डिस्कस कर लेते हैं. 28 प्रोटॉन्स, ठीक है,
And look at this one. This is 0.05. The neighbor is 0.004, and then again it is 0.05, which is back to the previous magic number, and 0.49, 0.51. So quite not very well answered at this point also. We go further higher. Look at 50. Now you can see it is 0.15, 0.13, 0.015, 0.130, and all these numbers are quite higher because we are going to the previous magic number, and these numbers are lesser. कुछ इसमें ज़्यादा भी हैं, but more or less less है. When we go for the 82, then we find a good evidence that yes, it is 65. उसके नीचे सब कम है. 57, 56, 51. उसके नीचे फिर से कम है. You go for 126. Again, this is 0.1. This is also 0.1, but before that it is very less, and after that also it is very less. So now I will plot this. Number देख करके पता नहीं चल पा रहा है, but when we plot we will see the picture. This is a faint evidence. इसको पकड़ना easy नहीं है. जब तक आप ये नहीं plot करोगे दोनों number को difference को, and these numbers are very small. This is very faint, but you can predict, yeah, check in the calculated and measured value, or calculated and theoretically measured value. Let me just plot it, and I will plot with respect to neutron, or let me plot with respect to A only. So I will just hide these two. Plot with respect to A. This is actually plot. So I will plot selection of this. Okay. So nothing is visible. है ना, यहाँ तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा. But A के साथ हमारा difference plotted है. So what we have to do? We have to remove the first number. That is very high. So what we can do? Let me just expand this one first, and then I will just restrict ourselves. पहले मैं A की value को restrict कर रहा हूँ. I will fix the value not from 0, but I want from 28. एक second बेटा. I will mark it to 28 only. Okay, and this I don't require 300. I will fix it to 250. Okay, still I don't find anything because these numbers are, I have to format this axis also. So this is starting from -2. I don't want -2. I can put it 0. And this I don't want to go to up to 10. What I want to go up to, let me first plot it for 1. Still I'm missing certain things. तो 0.1 तक ही जाना है, मुझे ज्यादा जाना भी नहीं है. तो इसको हम कर लेते हैं -0.1, 0. This I will go for 0, नहीं 1.1. ये 1.2 कर लेते हैं. अच्छा 0.1 है, सॉरी 0.1 है. Highest value is 0.1. So this I will make it to 0.12. Now you see the difference. Still we don't require these numbers. थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पे. But look at these numbers. This peak which you are able to see, बड़ा prominently ये जो number है ना, 1 यहाँ पे तो A के हिसाब से दिखा रहा है 208, but you can check that 208 is 126. See here, I can show you on the data. This number 208 है ना, A की वैल्यू 208 है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन नंबर
126 है. Are you able to see that? Yes, sir. Yes, sir. This 126 आप ये देखो पीक आपका यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस, यानी उससे पहले उससे नीचे आपके बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस, यानी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में डिफरेंस बहुत कम है. दे आर मैचिंग विथ ईच अदर, बट calculated value does not match with actual value of the binding energy at these magic number. यहाँ पे मैं मिस क्यों कर रहा हूँ पीक, क्योंकि मैंने वो एटम लिया ही नहीं है, बिकॉज मैंने स्टेबल एटम लिया था. कुछ ऐसे भी हैं आइसोटोप जो स्टेबल भी हैं, बट उनका एबंडेंस बहुत कम है, हार्डली 1% 2% एग्जिस्ट करते हैं. तो एबंडेंस इज वेरी लेस, बट मीन्स यू कैन सी द पीक विच इज अराउंड, मीन्स ये 128 तो ए नंबर है, बट इस नंबर को अगर चेक करते हैं, दिस इज 138. इफ आई चेक द डेटा को एक बार जरा चेक करता हूँ, 138 पे क्या आ रहा है, 138 के अराउंड दिस वन 82. यू कैन सी दिस ऑल्सो कि 82 के आसपास पीक आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है एक पीक. तो दिस कर्व इज you will not find in the crane, but this is actually normally people do in the research में इस कर्व को ड्रॉ करते हैं. लोअर न्यूक्लिया के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट यू कैन ऑलवेज प्रेडिक्ट. यहाँ पे भी पीक है, यहाँ पे भी पीक है. दीज नंबर आर नॉट न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर, दीज नंबर आर ए नंबर. तो इनके स्प्लिट से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर बनेंगे. ठीक है, तो नॉर्मली 50 28 पे तो हम नहीं लेते हैं, 28 से आगे लेते हैं, जहाँ पे 50 मीन्स 28 अगर आपका एन या जेड के इक्वल है तब वहां से हम कैलकुलेट करें, यानी इस इतने एरिया को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं. लाइटर न्यूक्लिया के बहुत डिफिकल्ट है, लाइटर न्यूक्लिया में उस पीक को सर्च करना, it is very difficult, but heavy nucleically you can always find these peaks are existing, and these peaks are existing at magic numbers only. Clear? Is it clear? Okay, is it clear? हाँ या ना बोलो, तभी मुझे भी वो आएगा ना कि मैं कुछ करवा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है. अब एक और कर्व है, लेकिन शायद वो बुक में वो भी कर्व नहीं है. दैट कर्व इज रिलेटेड टू द आइसोटोन. यू रिमेम्बर व्हाट इज आइसोटोन? लास्ट टाइम हमने आइसोटोन डिस्कस किया था. Isotones. Yes, sir. Same number of neutrons. Same number of neutron, and how many protons are possible. Means you can have a collection in which you just pick one neutron equal to 1, how many atoms are existing, how many nuclei are existing. You pick n equal to 2, how many protons you can add to that particular thing. So you go on collecting that thing. Yani for a given n value, you are actually finding how many z are possible. You know, means if you find a nucleus with a certain n number, but there are so many z number, जैसे isotope में क्या है, for same z you have different number of n. Now we are focusing on the different way. For a same number of n, how many z is possible, and you just plot that how many, means with neutron respect, means how many neutrons you have collected, जितने भी आपने collect किए हैं, 1 से लेकर के ऐसे 100 तक आपने collect किया, 126 तक ले लिया, 150 तक भी collect कर लिए. You just plot on the x-axis 1 2 3 4 5 6 up to 150. I have not plotted here because I need to count that number, but मैंने count नहीं किया अभी, उसके लिए मुझे time लगेगा. But that plot, what it will show, that number of possible isotone will be more for those neutron whose means those nucleus whose neutron number is equal to magic number. Means if your nucleus have n equal to 126, then there is a larger number of possibility of z. Means this is what you can form. Means you can form more number of isotone. When your neutron number is equal to 82, then again you have more number of proton you can put, and means more number of nucleon you can form, or more number of isotone you can form. So when you will plot that particular curve, you can see there is a peak in that also. आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नंबर काउंट कर रहे हो कि कितने z में इसमें ऐड कर सकता हूँ, या कितने z की पॉसिबिलिटी है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन.
And when you plot that, you will find the peak, and that peak will occur at the magic numbers only. So there are so many evidence. There is no limit. Every experiment have this property. Okay. So what is the theory? What we have to do? अगर हमारे पास ये नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास मॉडल क्या होना चाहिए इनको फिट करने के लिए? आई जस्ट गिव यू 2 minutes एंड गिव मी द आंसर कि सर हम ये करेंगे तो हमारा ये शेल मॉडल आ जाएगा पिक्चर में. तो व्हाट वी विल डू, यू हैव ऑलरेडी डन. इसलिए मैं आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ कि सोचो और बताओ कि क्या करोगे जिससे आपका शेल स्ट्रक्चर का आइडिया आपको पता चल जाएगा. क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग. अगर नहीं किया होता तो मैं नहीं पूछता. So what you could do to justify these numbers which are existing means the number is, let me just give you the numbers also. 2, 8, 28, 20, 50, 82, 126, then I think 182. I don't remember, I have a doubt because book में रहता नहीं है ये, मैं कैलकुलेट करना पड़ता है. तो let me just 184, sorry 182 नहीं है, 184 है. ओके. नॉर्मली हम जो मैक्सिमम एविडेंस मिलता है, एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं हमें. अच्छा 128 मुझे यहाँ लिखना था, 120 यहाँ लिखना था. एविडेंस हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इन केसेस के लिए मिलते हैं. ये केस के लिए ढूंढना बहुत मुश्किल है. हार्डली द एटम इज गोइंग टू एग्जिस्ट और न्यूक्लियस इज गोइंग टू एग्जिस्ट. एविडेंस इनके लिए हमें ज्यादा मिलते हैं नेचर में, बट these also have, this we have to include. So what we can do, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए. मुझे ये बताओ कि क्या मॉडल यूज करते हैं जिससे हमारा शेल जैसा पिक्चर आता है? आपने इलेक्ट्रॉन के लिए किया हुआ है, तो प्रोटॉन के लिए भी वही करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया था आपने? हाउ यू हैव गॉट दिस 1s 2s 2p 3s 3p 3d and so on? How you have got this? ये कैसे आया हमारे पास? ग्राफ. ग्राफ से? कौन से ग्राफ से? ग्राफ तो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं, हमें तो थ्योरी बनानी है ना. मैं तो सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन में भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p. तो एक दिन अफवाह उठा अपने नींद में से और उसने बोला ऐसे लिख देता हूँ, अब यही हमारा यूज होगा. या पॉली ने आके बोला कि नहीं ये ऐसे फॉलो करो, देखो मैंने कुछ लिखा है इसी को फिट करो. सर पॉसिबल एनर्जी स्टेट. हाँ क्या? पॉसिबल एनर्जी स्टेट. Possible energies value, but yes, yes, the first evidence or the first theory which try to fit this model आपने पढ़ा हुआ है. ध्यान से सोचो, थोड़ा सा स्क्रैच करो. बोर ट्राई टू फिट दिस फर्स्ट टाइम, है ना. बोर मॉडल हमारे पास है ना, विच वाज द क्रूड मॉडल. तो बोर हैज फिटेड दिस कि ऐसा ऐसा कुछ हमारा, क्यों हमारा इनर्ट गैस इतना वो होता है, उसमें क्यों इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दूसरे में इतने नहीं होते हैं, कि व्हाई दिस थिंग्स आर देयर, व्हाई दिस अरेंजमेंट इज देयर. तो बोर ट्राई टू डू दैट एंड ही सेड कि कुछ आपका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इट विल मेक अ रेडियस, इट विल मेक अ सर्टेन लाइक सर्टेन थिंग्स. ही हैज फिटेड सर्टेन थिंग्स कि वो कुछ कुछ उसने निकाला, वेलोसिटी, रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, एंड ही गॉट दीज नंबर्स. बट एग्जैक्टली उसका भी नहीं आया था. Then the best way is the Schrodinger equation. You write the Schrodinger equation, and if you know the kinetic energy function and potential energy function, then you can solve that equation and you will get different energy value. And for those energy value, you can predict the eigen functions. Clear? है ना? है या नहीं है? बेस श्रोडिंगर इक्वेशन ही तो एक बेसिक हमारे पास टूल है
and when we solve that we get all the prediction of all the quantum numbers. उसमें अगर श्रोडिंगर इक्वेशन में आपके n l m s एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, दैट इक्वेशन गिव यू, बिकॉज इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर व्हाट काइंड ऑफ n values, for what kind of l values, for what kind of m values, for what kind of s values, these equation is possible. श्रोडिंगर ने कुछ फिजिक्स नहीं किया, उसने सिर्फ मैथमेटिक्स किया. क्वांटम मैकेनिक्स इज जस्ट मैथमेटिकल. आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको सॉल्व करना है. वो किस कंडीशन पे सॉल्व होगा, that is what you, and that condition is predicting your all these numbers. Agreed? Still not agreed? Yes, sir. First crude way of prediction was done by the Bohr. He has given the Bohr model that is famous for that Bohr model you already know, but that was crude, that was not exact. Then the Schrodinger equation for आपको कोई भी एग्जांपल क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ भी देता है ना प्रॉब्लम, तो वन ऑफ द बेसिक टूल दैट इज श्रोडिंगर इक्वेशन या हेज़ेबर्ग अनसर्टेनिटी. ये दोनों फॉर्मूले में से आप दोनों में से कोई भी यूज करो, यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग. बट श्रोडिंगर इक्वेशन इज मोर वर्सेटाइल बिकॉज इट गिव यू द आइडिया ऑफ वेव फंक्शन आल्सो, कि ये वाला वेव फंक्शन इस इक्वेशन को फिट करता है. मींस कोई इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल पेंडुलम का इक्वेशन है. आप पेंडुलम के इक्वेशन में क्या करते हो, आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हो ना, कि थीटा का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेविएशन डिफरेंशियल है, फिर दैट इज इक्वल टू मींस द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू थीटा ओनली, एंड देन यू सॉल्व दैट इक्वेशन. फिर आपको थीटा की वैल्यू मिल जाती है, उसका एक फंक्शन मिल जाता है, वो साइनसोइडल फंक्शन होता है, कि अब देखो थीटा है वो साइन के फंक्शन से वेरी करेगा. स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, आपने तो सिर्फ लिखा द एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. वहां पे हम डिस्टेंस नहीं लिखते हैं, वहां पे हम थीटा लिखते हैं, यानी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट थीटा, एंड वी सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें थीटा की वैल्यू इन साइनसोइडल फंक्शन आ जाता है, बिकॉज दैट इक्वेशन इज एक्चुअली it will always give a periodic solution. In the same sense, what we will do, we know the potential of the nuclei. और पोटेंशियल का हेल्प किसने किया, जिसने रेडियस निकाला उसने बता दिया कि रेडियस कुछ इस तरह से वेरी करता है न्यूक्लियस का. फर्मी मॉडल जिसने किया उसने पोटेंशियल का स्ट्रक्चर बना दिया कि न्यूक्लियस का पोटेंशियल इस तरीके से वेरी करता है. तो दे हैव गिवन द आइडिया ऑफ पोटेंशियल. वी विल यूज दैट पोटेंशियल and we know what is the kinetic energy, because these things are moving in a circular way. So we have two kind of kinetic energy, one is rotational, one is translational. But इतना डिटेल में हम जाएंगे नहीं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ कि आप कल को ऐसा करो कि सर ये अब क्या पढ़ाया जा रहा है, अब तो समझ से बाहर हो रहा है. तो समझ से बाहर नहीं हो, बस just I'm giving you an idea that we can use this Schrodinger equation and we will solve it. And once we solve that, we will not do the solution here, but once we solve, we get certain possible values of n, energy quantum number, l, azimuthal quantum number, and you can also have m and ms, that is magnetic, and you have a spin. Spin तो given ही होता है, उसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक भी नोन होता है. मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो n और l की वैल्यू निकालना. ठीक है, तो n और l का प्रेडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डन बाय द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन. So the potential is given to you. पोटेंशियल न्यूक्लियस का पहले से ही नोन है, बिकॉज उसका रेडियस लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके एक डिफाइन रेडियस का एक पिक्चर बनाया है. वी विल यूज दैट पिक्चर, वी विल यूज दैट सेम डेफिनेशन ऑफ रेडियस फॉर द पोटेंशियल आल्सो, एंड वी विल सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन, नॉट एग्जैक्टली बट रफली. हम रफली भी ऐसा कह रहा हूँ कि सिर्फ हमने लिखा इक्वेशन और उसका सोल्यूशन लिख दिया, बस इतना भी है, इतना ही हमें करना है, हमें आइडिया होना चाहिए. हम फिजिकल साइंस वाले नहीं है कि हम सिर्फ लिखें कि हाँ श्रोडिंगर इक्वेशन से हमारे आंसर आ जाते हैं तो हमने ये लिख दिया आंसर. नहीं, हम ऑनर्स वाले स्टूडेंट है तो थोड़ा सा एक हमें आइडिया होना चाहिए कि कहाँ से की चीजें, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग एक्चुअली. दैट वी विल डू ऑन मंडे, बिकॉज टाइम भी हो गया है, 50 हो गया है, तो आज हम इतना ही करते हैं. बट व्हाट वी कैन डू, या मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपको जहाँ से मैं स्टार्ट करेंगे. ओके, व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट टाइम जब करेंगे तो हम थोड़ा सा वो डिस्कस करेंगे. बट व्हाट वी हैव टू डू, the shell model actually done two things. First, it has choose a potential.
a best fitting potential for the nucleus. That is what the shell model has done. Shell model का जो आंसर आया कि आपको ये नंबर जनरेट करना है, चाहे जैसे भी करो ये नंबर जनरेट होने चाहिए. तो first thing what we can do, we can use the Schrodinger's equation, that is minus h bar square upon 2m del square plus there is a potential function. ठीक है, this is a kinetic energy, this is a potential function, and there is another quantity or that I'm not writing exactly here, but हम पहले wave function लिख देते हैं. We will have wave function which is r theta and phi. Spherical system है तो r theta phi use करते हैं. That will be this one. ठीक है, clear? And theta and phi, they are concerned with the rotation. They're concerned with the rotation, and radius is actually concerned with the energy. जो थीटा और फाई है ना, वो आपको ये दोनों क्या देते हैं आइडिया, एल का देते हैं, एम का देते हैं और एस का देते हैं. ये आपको आइडिया किसका देता है, एन का देते हैं. जब भी और if you have done hydrogen atom in the previous semester, then you easily know that this theta, I mean r theta phi, can be divided into three parts, or normally we divide into two parts. One is radial component and one is angular, or you can say rotational, or what kind of any other name that you give. LM के नाम से हम डिनोट करते हैं, थीटा फाई लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, हम लिखते हैं उसको फाई से डिनोट करते हैं. वी कैन ऑलवेज सेपरेट दीज टू. ये भी नहीं पढ़ा आपने जब हाइड्रोजन एटम आपने सॉल्व किया होगा ना, तो ये पढ़ा होगा आपने. और इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, थीटा का भी कर सकते हो अलग से और फाई के लिए भी कर सकते हो अलग से. तो you can divide into three parts, and then you can use the separation of variable. And what important is, we will find the relation between n and l. हमें n और l का रिलेशन चाहिए. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि न्यूक्लियस के लिए पोटेंशियल कौन सा फिट होगा. दैट इज दिस वन. लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया. तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उससे डरने वाला कोई वो नहीं है कि इक्वेशन हमें दोबारा क्या सॉल्व करना पड़ेगा. नो, we don't need to solve the equation. So what we have to do, the first thing is the well fitting potential is square well potential, which is being used by the Fermi gas model. Fermi gas model has used this square well potential and all the nuclei within this potential only. It means what is happening, V is tending to infinity or equal to infinity, you can put at the boundary, and at means V is 0 at this point. So we have a square well. There is a well which is very deep, very deep. Its wall is infinite. You cannot come out. So this is one of the known potential in the quantum mechanics. So if we use this potential and we fit in the Schrodinger equation and we try to find the value of n and l. Not going to detail, but Bessel's function अगर आपने पढ़ा है तो Bessel's function का यहाँ use होता है. तो पहले मैं पढ़ाता था, वो भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं. Bessel's function को कैसे हम यूज करते हैं तो वो भी हम नहीं पढ़ेंगे. But what the predicted when you do the solution of Schrodinger equation using this kind of potential, what is the picture you are getting for given L? There are several possibility of n and so on. For next L you have and so on. For next L, this we get, this we can do the analysis, but हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम शॉर्टकट में जा रहे हैं. सिर्फ इस पोटेंशियल का जो आंसर होता है, हमें एनर्जी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ n और l के कॉम्बिनेशन से मतलब है. For which n, what are the possible value of l? For which l, what are the possible value of n? This is what we want to know. Because हमें सिर्फ मैजिक नंबर से मतलब है, वो हम इजिली यहाँ से लिख सकते हैं. ठीक है. So these are the possibility and you can go for many things. Means 2, 3, 4, 5, 6 जितने लिखना चाहते हो लिख सकते हो. Anything difference from your known potential function? तो पहले से आप इलेक्ट्रॉन के केस में जानते हो, ये इलेक्ट्रॉन से ये सेम ही पिक्चर आ रहा है यहाँ पे n और l का कॉम्बिनेशन, या डिफरेंट आ रहा है. मींस जो इलेक्ट्रॉन के लिए हम फॉलो करते थे, क्या यहाँ पे भी वही फॉलो हो रहा है या डिफरेंट है?
N is again your principal quantum number, L is your azimuthal, means N is concerned with the energy, L is concerned with the rotation. ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन एक एनालिसिस से आता है, वो एनालिसिस हमने स्किप किया है, बट for this potential we get this kind of analysis. Means if you have a potential like this, then L is predicting the value of N. Next L is predicting the value of N. इलेक्ट्रॉन केस में क्या होता था, पहले N की वैल्यू आती थी 1, फिर हमारे पास L की वैल्यू 0, N की वैल्यू क्या आती थी 2, L की वैल्यू क्या आती थी 0 एंड 1, N की वैल्यू क्या आती थी 3, L की वैल्यू क्या आती थी 0, 1 एंड 2, यानी लेस देन N-1 तक जाता था वो। क्लियर? ये तो क्लियर है ना? Is it clear? Yes, sir. This is what we know, already know for the electron. But nucleus के लिए ऐसा नहीं आता, nucleus के लिए just reverse है। L0 के लिए N की 1 वैल्यू भी पॉसिबल है, means the spectral value which you will write for this case, अब हम इसी कॉम्बिनेशन को यूज करके what we can write the electronic, जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था ना, तो we will write the nucleon configuration within the nucleus. And obviously जब हम पोटेंशियल सॉल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन का अलग करेंगे और प्रोटॉन का अलग करेंगे, दोनों का सेपरेटेड, दोनों के सेपरेटेड होंगे, तो दोनों के अपने इंडिविजुअल वी विल फॉलो द कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, अब इनको देखो, n इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो 1s इज पॉसिबल, n इक्वल टू 2 है और l इक्वल टू 0 है, यानी 2s भी पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉन में 2s नहीं होते थे, अच्छा सॉरी 2s होते थे, नेक्स्ट वाला नंबर नहीं होगा। लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर थिंग, ये 1s हो गया, नेक्स्ट नंबर देखो क्या है 1p, वी कैन राइट। अब ये मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, जो कि एनर्जी के ऑर्डर में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो एनर्जी की वैल्यू इसी सेंस में आती है। देन वी हैव 2 सॉरी 2d नहीं 1d, देन वी गेट 2s। इलेक्ट्रॉन में 1p नहीं आता था ना, इफ यू रिमेम्बर 1p केस नहीं होता था इलेक्ट्रॉन में, 1d केस नहीं होता था, बट न्यूक्लियस के केस में वी हैव 1s 1p 1d 1f 1g 1h एंड सो ऑन। Then we have 2s, and then we have 1f, then we have 2p, then we have 1g, then we have 2d and so on। अगर मैच करोगे तो इन्हीं इक्वेशंस को हम यूज करके लिख रहे हैं। 1s is this one, 1p is this one, 1d is this one, then 2s is this one, 2s is this one, then 1f is 1, means आप एनर्जी की वैल्यू 1 लिख रहे हो, 1 is possible, एंड आपकी L इक्वल टू 1 2 3 सभी पॉसिबल है ना, तो N इक्वल टू 1 के लिए आपका L इक्वल टू 3 भी पॉसिबल है, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग 1f, एंड दीज आर द एनर्जी लेवल्स। So these two are very close to each other, and this is again, these two are very close to each other, and this is again, it has two more things, 1h and 3s, तो तीन और यहाँ पे है। ठीक है, ये मैंने बड़े फास्ट वे में किया है, थोड़ा जल्दी किया है, तो मे बी जस्ट वी आर राइटिंग द एनर्जी लेवल्स, एंड इनकी कैलकुलेशन होती है, एनर्जी वैल्यू हमने ऐसी नहीं लिखी है, एक गैप के साथ लिखा है, तो गैप इज बीइंग कैलकुलेटेड। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक केस में -13.6 आता है, फिर नेक्स्ट नंबर उसका n स्क्वायर से डिवाइड करो, यानी 2 स्क्वायर से डिवाइड, यानी 4 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट समथिंग व्हिच इज 3 पॉइंट समथिंग एंड सो ऑन, तो you get certain, so similar kind of thing which we get for the nucleus also, but this spectral notation is different, that is not followed by the electron से थोड़ा सा डिफर करेगा ये। and obvious, if s is means spectral value s means आपका s ऑर्बिट है, उसमें दो पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियन डालने की, p में 6 की पॉसिबिलिटी है, d में 10 की पॉसिबिलिटी है, s में अगेन 2 की पॉसिबिलिटी है,
F में 14 की पॉसिबिलिटी है, P में 6 की पॉसिबिलिटी है, G में 18 की पॉसिबिलिटी है और D में फिर से 10 की पॉसिबिलिटी होगी। H में कितना होगा, हमने 18 तक चले गए तो 14 4 में 22 की पॉसिबिलिटी होगी और S में फिर से 2 की पॉसिबिलिटी होगी। तो दीज आर द बिग गैप्स, सो दिस वी कैन कॉल इट एज अ शेल। ये मिलकर के एक शेल बना रहे हैं, ये मिलकर के एक शेल बना रहा है, ये मिलकर के एक शेल बना रहा है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। So the first shell closure will give me 2 number. Second shell when it is closed to 6 plus 2 8 I will get. 8 न्यूक्लियॉन्स फिट हो जाते हैं तो हमारा एक शेल क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये दोनों पर क्लोज में है तो नेक्स्ट नंबर विल बी 8 plus 10 18 plus 2 20. Clear? When this shell is closed you are fitting 20 nucleon. Next number is 34, which is not a magic number. Next number is again a different number. 34 plus 6 आपका 40 हो गया, 58 हो गया. This is again not a magic number. Means इतना ही आज खत्म करेंगे. Means this potential we cannot use for the nucleus. This potential we cannot use for the nucleus because it does not give you the magic number. Then we will treat two more potentials. One is harmonic, and then we will use the combination of square well and harmonic as the intermediate potential, and that we will try to solve, which is actually fit exactly with the radius prediction of the nucleus. तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये फर्स्ट अजम्पशन यानी हमने पोटेंशियल एक बड़ा अच्छा सा चूज कर लिया, क्या हमें आंसर मिल रहा है मैजिक नंबर का, अगर नहीं मिलता है तो वी नीड टू इम्प्रूव द थ्योरी. So that we will do in the next class, that is on Monday. Now you join the tutorial class. Clear? Is it okay till now? कोई डाउट है तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे जो शेल मॉडल से रिलेटेड है. ओके, Yes. so now you can join the tutorial class.